Hello, good morning. I am Dr. Ansari Naseem, the Department of Political Science, Politics G1, and Unit number 2, Fundamental Rights. I have introduced the fundamental rights, and fundamental rights are outstanding features of Indian Constitution. Dr. Baba Saheb Ambedkar was permanent draft committee chairman of the Constitution. He was carefully of the Indian traditional culture and heterogeneous culture, for example, and multilinguistic, multicolor, multi-religion, multi-caste, multi-creed, etc. देखिए, our fundamental rights are another features of Indian Constitution, and Dr. Baba Saheb Ambedkar wrote that our constitution, and there are the carefully the traditional culture. जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू says that about the Indian politics is the very dull polity system. Why do? Now the Indian people had lived the thousands of years slavery of the life, but now deep-rooted poverty, ignorance, literacy, these are the set of the all evils in the society, यानी यही तमाम जो है हज़ारों साल हिंदुस्तान की जनता ने गुलामी की ज़िंदगी गुजारी है, और फिर उसके बाद उसी वजह से यहाँ पे जहालत आम है, लिटरेसी है, डीप रूटेड पावर्टी का गुर्बत की सतह से नीचे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं. तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द फुल्ली अवेयरनेस ऑफ द फुल्ली careful of the traditional culture of the Indian culture, but now wrote that the Indian Constitution and wrote that the fundamental rights are another features of Indian Constitution. Our government, a parliamentary form of government, and legislature, executive and judiciary. Legislature means a higher law making body, executive means a administrative body, judiciary means is justiciable, जहाँ पे हमको इंसाफ दिया जाता है, जहाँ पर हमको हमारे कानून के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. तो जुडिशरी इज़ द गार्जियन एंड कस्टोडियंस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर रोट दैट इन चैप्टर नंबर 3. देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंदी बुक की शक्ल में लिखा हुआ है. टोटल पेज कंसिस्ट ऑन 395 पेजेस एंड टोटल 22 चैप्टर्स एंड 9 शेड्यूल्स, टोटल आर्टिकल्स 398 आर्टिकल. तो इस तरीके से जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स रिटर्न स्ट्रक्चर. नाउ फंडामेंटल राइट्स आर रोट दैट इन चैप्टर नंबर 3 एंड टोटली आर्टिकल कंसिस्ट ऑन आर्टिकल नंबर 12 to 35 टू प्रोवाइड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. और इस तरीके से आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 वो हमें फंडामेंटल राइट को मुहैया करता है. डिस्क्राइब्ड द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन and judiciary is guardian and custodians of our fundamental rights. Our constitution in written structure, fundamental rights are described in chapter number 3 of the constitution under the article number 12 to 35. Fundamental rights are grant of constitution. Hence, no government, any authority of the government suspend or refuse enjoyment of this right. Only the President of India has right to suspend and fundamental right in the period of emergency. This period should not be longer than 6 months. But now what is meant by the emergency? And article number 19 to provide of the emergency. Now the emergency is the 3 type of emergency: national emergency, constitutional emergency and financial emergency. But first time in this country during the period of Pandit Jawaharlal Nehru to declare that in that's time Indo-China war in this state, that's time the Prime Minister of Motilal Pandit Jawaharlal Nehru declared that the national emergency. And then after during the period of Miss Indira Gandhi in 1974 to 75 to declared that the constitutional emergency. यानी इमरजेंसी में क्या होता है कि ये राइट सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है और वो जो है पूरे कवानीन को सस्पेंड कर देता है और वो पूरा पावर जो है इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन 42nd अमेंडमेंट
In 42nd Amendment now to fix of the period of only 6 months. During the period of constitutional emergency, in the period of Prime Minister of Miss Indira Gandhi, now there are declared that emergency is 19 months. But now then after the 42nd Amendment, their period fixed of the 6 months. In democratic countries, citizens are given some fundamental rights which are listed in the constitution and even accepted the government. These fundamental rights to the citizen by the कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, यानी ख़ास तौर से ये राइट जो है सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए दिया जाता है, आवाम के लिए दिया जाता है. नाउ मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट. नाउ मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर ह्यूमन राइट्स मीन्स ह्यूमन राइट्स एंड दिस राइट्स टू प्रोवाइड ऑफ द सिटीजन इन द फील्ड ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम. बट नाउ दे आर concept only understand in their democratic form of government, यानी सिर्फ और सिर्फ हम ये ख्यालात, ये नज़रिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही ले सकते हैं. और ये एक तरीके से इंसान को जो है आज़ादी मुहैया करती है, शहरियों को ज़िंदगी गुजारने के हुकूक मुहैया करती है. बट नाउ इन द फर्स्ट टाइम 1928 मोतीलाल नेहरू डिमांडेड फॉर द प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिशर एम्पायर of the to demanded and to realized of the fundamental respect of the fundamental rights and importance of the fundamental rights. Now that's time the various political leader to introduce the respect of the religion, to respect of the citizen and important and value of the public opinion. But now first time Lokmanya Tilak started their core view of the program and to introduce of the national education. Why do now the British Empire to introduce of the uniform code and to establish the education in ओनली इंग्लिश लैंग्वेज. उस वक्त तो अंग्रेज़ों ने जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, जबकि हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बान के बोलने वाले लोग हैं, बट दे आर डोंट नो ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश ज़बान को नहीं जानते थे. इसलिए जो है लोकमान्य तिलक स्टार्टेड देयर नेशनल एजुकेशन, बट देयर मूवमेंट इज़ वेरी सक्सेसफुली. फर्स्ट टाइम मलकाई विक्टोरिया डिक्लेयर्ड दैट सोशल लिबर्टी, और उस वक्त तो पहली मर्तबा मलकाई विक्टोरिया ने सोशल लिबर्टी का ऐलान किया था. और उस वक्त तो नंबर ऑफ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट इन दिस स्टेट, और उस वक्त तो पहली मर्तबा हिंदुस्तान में ज़बान के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम हुई. द हिंदी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम बनारस एंड उर्दू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंड मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम अलीगढ़ एंड नेशनल एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम लाहौर एंड इंग्लिश यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम मुंबई. तो इस तरीके से नाउ व्हाट इज़ मीन बाय द फंडामेंटल राइट. नाउ द फंडामेंटल राइट्स आर द लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, है ना, लाइफ एंड लिव इन द ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी गुजारने के हुकूक मुहैया करना. तो एज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, द मेन पर्पज़ ऑफ द डिक्लेरेशन इज़ टू अपोज द गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री. If these rights are violated, then there are certain laws to restrict the government. During the period of Indian freedom movement, most of leaders realized the importance of fundamental rights and they demanded the Britishers should respect the citizen right. In 1928, the Motilal Nehru Committee demanded for fundamental right, that is post-independence. Our constitution adopted the fundamental right, but now the various sources of the Indian constitution, so now the fundamental rights are adopted by the American constitution. And then after 1875, the America Constitution Organizations of Magna Carta Organization, but independence of America, establishment of democracy form of government. And in the world, the first of all, America country introduced of the fundamental right, but our country adopted of the fundamental right, and Dr. Baba Sahab Ambedkar wrote that fundamental right. There are two types of fundamental right, and negative fundamental right and positive fundamental right.
निगेटिव फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जांपल बट लिमिटेशन, देखिए जैसे हमको प्रॉपर्टी रखने का जो है पूरा राइट दिया गया है बट अंडर द लिमिटेशन। अभी देखिए जैसे जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रखता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर उनके ऊपर केसेस चलाए जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उनकी जांच की जा रही है, तो ये क्या है निगेटिव फंडामेंटल राइट। बट पॉजिटिव फंडामेंटल राइट एंड थॉट एंड एक्सप्रेशन, हमको जैसे बोलने की आज़ादी दी गई है, फ़कीरों को भीख मांगने की आज़ादी दी गई है, बट नाउ दीज आर द अनलिमिटेड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, अनलिमिटेड कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सो लाइक दैट द पॉजिटिव फंडामेंटल राइट, तो टू टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, निगेटिव फंडामेंटल राइट एंड पॉजिटिव फंडामेंटल राइट। एंड द फंडामेंटल राइट्स देयर आर टू टाइप, बट fundamental rights are wrote that in chapter number 3rd and wrote that in article number 12 to 35, and fundamental rights are classified from 7 categories. Number 1, article number 14 to article number 12 wrote that India is federal, इंडिया इज़ फेडरल, यानी हमारे पावर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सेंटर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल नंबर 13, बट इंडिया इज़ फेडरल एंड 7 कैटेगरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे इलाके जो हमारे हिंदुस्तान के नहीं हैं लेकिन हमारे हिंदुस्तान के ज़ेर मातहत चलाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नगर, दादर, दमन, हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, बट इक्वालिटी बिफोर आइज ऑफ लव इन द फील्ड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, डोंट डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन द बेसिक ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन एक्सेट्रा। एंड आर्टिकल नंबर 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इन द फील्ड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड economic right. Article number 23 to 24 provide of right to against and exploitation. Article number 25 to 28 right to freedom of religion. Article number 19, article number 29 to 30 right to educational and cultural right. Article number 31 to 35 right to article number 31 right to private property. Article number 32 right to constitutional remedies. So now these are the introduction of fundamental rights. Thank you very much. Thanks lot.